औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक। मेरा और आपका साथ रहता है एवरी फ्राइडे को रात 8 बजे से लेके अराउंड 9 और सवा 9 बजे के दरमियान। और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न के ऊपर। और आज जून 11 है, फ्राइडे का दिन है। हैप्पी फ्राइडे टू एवरी वन ऑफ़ यू। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल आवर व्यूअर्स ऑफ वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न। नाज़रीन, ये जो वीक था ये बड़ा टफ़ वीक था। एज़ यू ऑल नो कि जो लंदन ओंटारियो में जो एक वाक़ा पेश आया जिसमें कि हमारी एक पाकिस्तानी फैमिली, 4 उसमें लोग जो थे वो एक रन डाउन के अंदर बाय एन एक्टिविस्ट जो कि 20-21 साल का था, विच वाज अ टेररिस्ट अटैक इन अ कैनेडियन सॉइल। उनको रन डाउन कर दिया और उनसे उनकी शहादत हो गई। और उनका एक बेटा जो है 9 साल का, वो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। तो इट हैज़ बीन अ वेरी सैड वीक। और इसको बड़ा कंडेम भी किया गया, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से लेके प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रीमियर फोर्ड और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, दे ऑल कंडेम्ड इट। बट व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दिस कि हम इस मुल्क में रहते हुए अगर अब सेफ़ नहीं हैं तो हम इन मुल्कों में जो आए हैं यहाँ पर ख़ास तौर पे, और ये जो मामलात हो रहे हैं इस्लामोफोबिया के हवाले से, जो हेट क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और ये पहला कोई एक इंसिडेंट नहीं है जो कि हुआ है। इससे पहले पिछले साल भी 2 एक इंसिडेंट हो चुके हैं जिसमें कि लोगों को मार दिया गया, इन्वेस्टिगेशंस हुई, कुछ लोगों को पकड़ा गया, अभी उनके केसेस चल रहे हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंटली ये है कि ये इस तरह के क्राइम्स क्यों हो रहे हैं और इसका सद्दबाब कैसे होना चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं हमें करनी चाहिए और हमारा क्या रोल होना चाहिए उसमें। एज अ मीडिया हमारा क्या रोल होना चाहिए, एज अ सोसाइटी, एज एन ऑर्गेनाइजेशंस, एज इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारी काम कर रही हैं उनका क्या रोल होना चाहिए। और ख़ास तौर पे बहुत सारे हमारे जो यहाँ पर NGOs हैं जो काम कर रहे हैं, उनके क्या रोल होने चाहिए। क्या पेरेंट्स को घर में बैठ के माँ बाप से बात, यू नो, व्हेन दे आर सिटिंग ऑन अ टेबल, आर दे डिस्कसिंग विद देयर पेरेंट्स ऑल दिस प्रॉब्लम्स। क्या वो पूछ रहे हैं बच्चों से कि ये जो मामलात हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, वो डिप्रेस क्यों हैं, क्या कि वो आया ऑनलाइन हेट जो उनके क्राइम हैं उसके साथ उनका अटैचमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, या वो किसी ड्रग्स के ऊपर हैं, मेडिकेशंस के ऊपर हैं। लेकिन हमें ये बड़ा इम्पॉर्टेंटली सोचना पड़ेगा एज अ सोसाइटी, एज अ कैनेडियंस होते हुए, कि हमें अपने बच्चों के साथ बैठना चाहिए और उनके साथ बैठ के हमें बात करनी चाहिए और ये जो मामलात हैं इनको डिस्कस करना चाहिए। अगर बच्चे किसी ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, अगर आप फील करते हैं वो डिप्रेस्ड हैं, वो सेल्फ़ मेडिकेशन पे हैं, या लेट आते हैं और उनकी आपको एसोसिएशन का पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ है एज अ पेरेंट्स होने के नाते कि हमें बच्चों के साथ बैठना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। इसके अलावा बड़ा इम्पॉर्टेंटली ये है कि इस मुल्क में रहते हुए जो हमारे जुडिशरी लॉज़ हैं उनमें जो रिफॉर्म्स हैं उनको लाने की ज़रूरत है। और ये जो हेट क्राइम हैं इसको इस्लामोफोबिया ख़ास तौर पे जो हमारे लोगों के साथ हो रहा है, अभी कल ही एक और वीडियो जो है वो वायरल हुई है जिसमें कि एक कोई वाइट सुपरमिस्ट हैं, वो एक रोड क्रॉस करते हुए एक फैमिली जो है, जो कि हिजाबी फैमिली है, और एक गाड़ी उसके पास से गुज़रती है और वो उसको कहता है वीडियो में कि तुम वापस जाओ और इनको तुम मारो। तो मतलब ये जो मामला अब चल पड़े हैं यहाँ पर, इनको एड्रेस करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैंने कोशिश की है कि जो NDP की लीडर हैं हमारे साथ सयारा सिंह होंगी, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो हाउस के अंदर इस हवाले से क्या ऐसे मोशंस जो हैं उस पर बात हो रही है और क्या ऐसे रिफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर के वो बात करना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के कुछ कैंडिडेट्स जो कि नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं स्कारबोरो गिल्बर्ट से और के एरिया से, और उसके साथ साथ मिल्टन से समीरा अली हमारे साथ होंगी, मनाइल हमारे साथ होंगी, और मज़र शफीक साहब हमारे साथ होंगे स्कारबोरो से। ख़ास तौर पे आज एक विजिल हो रहा है जिसके कि हम लाइव कवरेज करने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और वो तकरीबन कोई 8:30 बजे शुरू होगा और मज़र शफीक साहब वहाँ पर होंगे। हम उनसे बात करेंगे लाइव ड्यूरिंग इस प्रोग्राम के हवाले से कि ये जो वहाँ पर विजिल हो रहा है वहाँ पर क्या अपडेट्स हैं उस हवाले से। तो वो हमारे साथ
इस हवाले से बात करेंगे। वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न जो है इसको आप देखते हैं 24 आवर्स हम आपकी साथ हैं और सारे IPTV बॉक्सेस के ऊपर हैं। यूट्यूब और फेसबुक पे भी हम लाइव होते हैं। मेरा जो प्रोग्राम होता है फ्राइडे का प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक, ये आप लाइव देखते हैं सारे नेटवर्क्स के ऊपर और IPTVs के ऊपर हम सारे बॉक्सेस पे हैं, आप हमें वहाँ देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें नेट पे भी देख सकते हैं और www.votmedia.ca हमारा जो है नेट का एड्रेस है और सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो करें वॉइस ऑफ टोरंटो TV पे। स्टूडियोज़ के लाइन के नंबर हमारे 905-670-4114 हैं जो कि आप हमारे स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। अगर आप ख़ास तौर पे आज इस हवाले से आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपने कोई थाट्स शेयर करना चाहते हैं, कुछ सेंटिमेंट्स आप अपने शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप हमें स्टूडियो में कॉल करके ज़रूर हमसे बात कर सकते हैं। 905-670-4114 हमारी स्टूडियोज़ की लाइन है। और अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपकी बिज़नेस की तफसील जो है वो बेहतर तरीके से नाज़रीन तक पहुंचा सकें, तो वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न पे आप एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज पैकेजेस अवेलेबल हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, आप हमें ईमेल कीजिए हमारी मार्केटिंग टीम को, दे विल गेट इन टच विद यू प्रोग्राम के बाद। अगर आप एज अ गेस्ट इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो आप प्रोग्राम के बाद हमें रब्ता कर सकते हैं हमारे स्टूडियोज़ के लाइन के ऊपर 905-670-4114 के ऊपर और आप हमसे बात कर सकते हैं। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, उसके बाद जब वापस आते हैं तो हमारे साथ गेस्ट होंगे। प्लीज़ आप देखते रहिए और डू नॉट चेंज दिस चैनल। यू आर वॉचिंग वॉइस ऑफ टोरंटो with me, Anjum Malik, with my show Prime Time with Anjum Malik on Friday. Please stay with us and we'll come back to you right after a couple of minutes. Thank you. रियल एस्टेट जरूरत भी इन्वेस्टमेंट भी। रियल एस्टेट खरीदते और बेचते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है? इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द सेलर्स एंड बायर्स। मैं असफर ताहिर आपके लिए ला रहा हूँ रियल्टर्स कैफे, जहाँ पर प्रोफेशनल रियल्टर्स एंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट्स आपके उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आप जानना चाहते हैं। रियल्टर्स कैफे ओनली ऑन वॉइस ऑफ टोरंटो TV। Since 1993, MWC food banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit Muslim Welfare Canada has made a concerted effort to lead the fight against child labor, poverty, and illiteracy in third world countries through the generous support of our donors. Both girls and boys receive free, good quality education. Help educate a needy child for just $1 a day or $30 per month. Donate generously. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Welcome back, viewers. You are watching Prime Time with me, Anjum Malik, on Voice of Toronto Television. अस्सलाम वालेकुम अगेन। हम एक छोटे से ब्रेक पे गए थे। हमारे साथ समीरा अली हैं जो कि मिल्टन से लिबरल कैंडिडेट हैं फॉर नेक्स्ट इलेक्शंस, जो कि प्रोविंशियल इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो आज हम ख़ास तौर पे एक तो उनकी राइटिंग के हवाले से उनसे बात करते हैं,
उनकी जो एफर्ट्स हैं मिल्टन में उस हवाले से, और प्लस हाउ शी इज़ फॉर सीइंग हर नेक्स्ट इलेक्शन, एंड ऑल्सो लिटिल बिट अबाउट इस्लामोफोबिया एंड दिस हेट क्राइम दैट इज़ गोइंग ऑन इन आवर सिटी, इन आवर कंट्री. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आई हूँ मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है. थैंक यू सो मच. नाजरीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक, और मेरे साथ हैं समीरा अली जो कि कैंडिडेट हैं लिबरल की मिल्टन से फॉर द नेक्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शन. तो आज हम उनसे थोड़ी सी बात करते हैं, एक तो उनकी जर्नी इन रिगार्ड्स टू विद दिस कैंडिडेट नॉमिनेशन, एंड ऑल्सो in regards to her vision, what she is foreseeing for the next election, and also hate crime and Islamophobia. This is one of the topic that we would like to discuss today. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो. आपने जैसे कहा कि आई एम द ओंटारियो लिबरल पार्टी कैंडिडेट फॉर मिल्टन, एंड अदर देन दैट लोग मुझे एज अ काउंसलर भी जानते हैं. मिल्टन में मैं सर्व कर रही हूँ पिछले 3+ ईयर्स से एज अ लोकल टाउन काउंसलर, और इट हैज बीन एन ऑनर टू सर्व माय कम्युनिटी. और जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं, जहाँ पे आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जहाँ आप अपने रूट्स डालते हैं, तो आपको उस कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ प्राइड भी होता है, और आपके अंदर एक लगन होती है कि जिस कम्युनिटी ने मुझे इतना दिया मैं उसको गिव बैक करूं. Right. That is where my passion comes from, to serve my community top and foremost. Secondly, of course, why Ontario Liberal Party? तो Ontario Liberal Party एक पार्टी है जो हमेशा प्रोग्रेसिव वैल्यूज को सपोर्ट देती है, और अंडर स्टीवन डेल डुका's लीडरशिप आई फेल्ट लाइक इट वाज टाइम कि ओंटारियो को एक ऐसी लीडरशिप मिले, जो लीडरशिप हमारे जो प्रोविंस है जिसका जो अभी हशर है, स्पेशली मैं एजुकेशन की बात करूंगी बिकॉज दैट इज वेरी रेलेवेंट टू मिल्टन. तो उसके लिहाज से आई फेल्ट लाइक ही वाज द राइट लीडर, एंड ही इज द राइट लीडर. और वक्त के साथ साथ देख रहे हैं कि जो भी इश्यूज आ रहे हैं, किस तरह के बयानात ओंटारियो लिबरल पार्टी देती है और बाकी पार्टीज क्या करती हैं. सो दैट इज व्हाट आई फोरसी फॉर मिल्टन इज अ फ्यूचर जहां पे हमारे बच्चों के लिए प्रॉपर एजुकेशन की फंडिंग सही टाइम पे आए. एज अ काउंसलर मैं लोगों से सुनती रहती हूँ कि हमारे पास ऑल डे गो सर्विस होनी चाहिए, प्रॉपर फंडिंग वक्त से मिलनी चाहिए, हमारे पास जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, सब चीजें, और ये सारी चीजें प्रोविंशियल फंडिंग से रिलेटेड है, प्रोविंशियल एलोकेशन से रिलेटेड है, और वो उसी वक्त किसी राइडिंग में आती हैं जब आपका एक वहाँ का एमपीपी पैशनेट हो, आपके लिए फाइट कर रहा हो लेजिस्लेचर में खड़ा होकर. आई होप टू बी दैट पर्सन फॉर मिल्टन. I have been doing that in my counselor role for the past 3+ years, and I carry that passion forward for Milton in the अच्छा future. समीरा, ये बताइएगा सबसे पहले तो आपका ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम ए काउंसलर रोल इनटू एन एमपीपी रोल, ये how would that kind of correspond with what you've been doing already in the community? Will you think that going into the house it will be a more better voice for you for working for your community in Milton as versus with the councillor? जी बिल्कुल, आप ने बहुत अच्छा सवाल किया है. ये सवाल मुझसे उस वक्त भी पूछा गया था जब मैं काउंसलर के लिए लड़ रही थी, बिकॉज बिफोर दैट आई हैव बीन वॉलंटियरिंग इन मिल्टन फॉर मेनी इयर्स विद रेगुलर एंड डिफरेंट चैरिटीज, नॉन प्रॉफिट्स लाइक फूड बैंक्स, लाइक द लीजन, लाइक विमेंस शेल्टर. तो मुझसे लोगों ने कहा था कि तुम ऑलरेडी ये काम कर रही हो, तो एज अ काउंसलर व्हाई यू फील दैट यू नीड टू गो फॉर दैट पोजीशन. तो मैं वही बात कहूंगी आज भी कि it is the next step to serve my community in a bigger, better way. With the same passion I have. ठीक है, तो मैंने एज ए काउंसलर जो काम किया है अपने टाउन के लिए, अपनी राइडिंग के लिए, चाहती हूँ उस काम को मैं एक बड़े लेवल पे ले जाके और ज्यादा सर्व कर सकूँ अपनी कम्युनिटी को. क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि प्रोविंस के थ्रू बहुत ग्रोथ का ताल्लुक है, फंडिंग का ताल्लुक है, और आई फील लाइक कि उसके जो प्रेशर्स हैं वो प्रॉपर्ली सॉल्व नहीं हो रहे फिलहाल. उसकी एग्जांपल में हमारे जिस वार्ड को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ उसमें एक स्कूल है जहाँ 90 पोर्टेबल्स हैं. अच्छा.
इनफैक्ट 99 पोर्टेबल्स हैं। उसकी वजह ये है कि स्कूल जो 2019 में तैयार होना था वो जी। आज तक तैयार नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही कंजर्वेटिव गवर्नमेंट पावर में आई उन्होंने सारी फंडिंग हटा दी और कहा गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कम बैक विद अ न्यू साइट प्लान, अ न्यू डिजाइन, इसमें से ये हटा दें वो हटा दें। तो उस वजह से जो स्कूल हमारी कम्युनिटी में आना था वो अब 3 साल डिले होके आएगा। उसकी वजह से पोर्टेबल पे पोर्टेबल ऐड हो रहे हैं, उसकी वजह से ट्रैफिक कंजेशन बढ़ रही है। वो तो पेंडेमिक बीच में आ गया तो ट्रैफिक का इतना बड़ा मसला नहीं हुआ जो मैं प्रेडिक्ट कर रही थी, लेकिन आई फील कि सितंबर से किड्स विल गो बैक टू स्कूल एंड द होल इशू विल कम बैक। एंड आई फील लाइक वी नीड बेटर पैशनेट वॉइस, क्योंकि जो इस कम्युनिटी में रहता है वही फील करेगा ना इसके प्रेशर। जी जी जी। सो आई लुक राइट अक्रॉस दैट स्कूल, आई फील द प्रेशर्स। करेक्ट करेक्ट। अच्छा मुझे ये बताइए कि एज़ यू नो कि इस वक्त हाउस में आई बिलीव 6 या 7 हमारे मेंबर्स हैं लिबरल पार्टी के पर प्रोविंस में, और एनडीपी के आई थिंक अराउंड 40 हैं और कंजर्वेटिव पार्टी के अबाउट मोर देन 100 और समथिंग। सो हाउ डू यू foresee yourself in the next election? It's going to be a very like a dog fight, a big fight. Gee, and I'm ready for the fight. I had a big fight for my nomination and I came out of it successful. Alhamdulillah, with people's support and with passion and with commitment, and I hope to do the same when it comes to the provincial election. Lekin the provincial election is, you know, has a lot of other factors. Includes how the leaders do in the debate. Yeah. It includes polling results. तो Correct. अगर आप पोल्स को देखें जो पहले थे, इवन 6 महीने पहले थे, वो पोल्स नहीं है, पोल्स आर डिफरेंट, राइट? Okay. एंड इट्स बिकॉज लोगों में फटीग आ गई है, बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक हैज मैच्योर्ड फास्टर देन यू वुड थिंक। यूजुअली कहा यह जाता है कि भाई एक टर्म में नहीं होता, 2 टर्म तो हर गवर्नमेंट को मिल ही जाते हैं, राइट? लेकिन बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक जो पॉलिटिकल पंडिट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि people have fatigue now, and because of that fatigue they will judge the incumbents in a different way, right? Especially partisan incumbents. So I feel like मेरे अपने भी यही sentiments हैं, और मैंने ये भी देखा है कि पोल के results भी different आ रहे हैं. There's lots of external factors involved. At the end of the day, I feel कि जो इंसान जितनी मेहनत करता है, जितनी अच्छी कैंपेन चल, जितनी अच्छी डोर नॉक करता है, फंड रेजिंग करता है, टीम बनाता है, वही जीतता है, एंड दैट इज माय कंप्लीट फोकस राइट नाउ। अच्छा ये बताइएगा कि एज अ होल लिबरल पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ स्टीवन डेल डूका, आपकी अभी विजन क्या है? व्हाट आर द मेन गोल्स दैट यू गोना बी और द एजेंडा दैट यू गोना टेक ऑन टू फाइट द फोर्थ गवर्नमेंट? That's a very good question. हमारा एक प्रोसेस है जो हमने शुरू किया हुआ है for the last 3-4 months. It's called Take the Mic. उसमें हमने ये किया कि हमने पूरे ओंटारियो में सर्वेस चलाए, जिसमें हमने इन्वॉल्व किया हर तरह के स्टेक होल्डर्स को, और हर तरह के हमने टॉपिक को उसमें उजागर किया. फॉर एग्जाम्पल एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म केयर होम्स, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन एंड एजुकेशन फंडिंग, सीनियर्स इश्यूज, इकोनॉमी, फाइनेंस. तो उस पे हमने पूरे प्रोविंस की पोलिंग की, सर्वेज किए, और लोगों के जो हमें रिस्पांस मिला, इट इज अनबिलीवेबल. एंड आई इनवाइट एवरीबॉडी टू गो टू ontarioliberal.ca, क्लिक ऑन टेक द माइक, और उस देखेंगे रिजल्ट्स के लोगों ने किस तरह सर्वे में एक तो पार्टिसिपेट किया है बड़ी तादाद में, और फिर कितने अच्छे अपने रिव्यूज दिए हैं, अपने कमेंट्स दिए. लिबरल पार्टी का, ओंटारियो लिबरल पार्टी का आइडिया और प्लान ये है, वी विल टेक from all of the ideas that people have shared, and the people who have shared the ideas, हमने ये नहीं कहा कि भाई सिर्फ लिबरल शेयर करें अपने आइडियाज. लिबरल, एनडीपी, कंजर्वेटिव, anybody can share their ideas. We will take your ideas. देखिए, मैं आपसे ये बात कहूंगी, मैं मानती हूँ कि we are just 7 people right now at the legislature. इस वजह से हमें mini grand party भी कहा जाता है, and people think it's very funny. But I understand that. देखें, जब इंसान अपनी
अपनी जो रियलिटी है उसको कबूल करता है ना, तब भी वहीं से चेंज आता है. We understand that. That's why we did take the mic, because we want to listen first. I feel like in the previous years we lost that touch with our grassroots, and that's why we started this process from grassroots से connect हो और सुने कि वो क्या, और जो हमारा प्लेटफॉर्म आए वो grassroots की voice हो. And that's what we're doing right now. We are listening, we are learning. I have another 4 minutes to talk to you. Then I have the NDP leader of the opposition coming after you on the show. So I want to touch base on a very, very hot and very fragile topic. That is Islamophobia and the hate crime that has been committed by some individuals in this country. Repetitively, it has been going on. And I've just seen a video today that has been viral on the social media, that there is a white gentleman looking at the window where the people are walking, the hijabi people are walking, and there's a truck passing by, and he's saying, okay, reverse the truck back and go and run these people down. I don't know if you have seen that video, but it is so shocking. And today, I was also kind of in a shock that in the House, the motion has been set aside by the Ford government. Yes, so this is very unfortunate, and I would just want to first offer my condolence for the Afzal family that was brutally murdered because of a hate-filled act of terror by a 20-year-old. I refuse to name that individual. I refuse to human, because in my opinion, he's not even human. A human can never commit such an act. But having said that, I have seen the video, the viral video you're talking about. I have talked to my local police about it, because जैसे मैंने उसको देखा, I reached out to Halton police and I said, what is going on? I don't feel safe when I look at this. As a Muslim person, it is criminal. It is a criminal thing that you are saying to a driver that reverse and go back and run these people over. Like how more criminal it could be. Yeah, and so the police tell me that first I thought I heard some rumors that the person belongs to Halton Hills, but police have told me he does not belong to Halton Hills. In fact, the Ontario Provincial Police has the case now, and I have heard that the channel has been taken down, and the police are looking into it very seriously, and they don't take these kind of threats lightly, because that's what it is. It is a threat. It is a threat. So what does Stephen Del Duca have in the works to fight Islamophobia when you guys come in power on the next election? We are constantly, like I said, listening to what people are saying, and right now we have around 7 to 8 candidates nominated who are Muslims. That includes myself. So that is a start. Other than that, I can tell you for a fact that not only did Stephen show up to the vigil, he said a few words, but those words were followed by action. Mitzi Hunter brought forward a notice of motion, which was, as you just told me, rejected by the Ontario PC party conservatives, Doug Ford conservatives, which is a shame, because the time to say we have to condemn whatever it is wrong is wrong. जी, लेकिन बातें करने का टाइम अब खत्म हो चुका है, अब एक्शन का टाइम है. ठीक है, इसी वजह से Del Duca brought forward that motion कि एक्शन कुछ किया जाए. ठीक है, जब आपकी सिर्फ 7 सीटें हो तो आप क्या एक्शन कर सकते हैं, राइट? आप कम से कम एक मोशन तो ला सकते हैं. तो वो मोशन लाया गया था इस उम्मीद के साथ कि भाई हम भी कुछ करें, हम कह कर आए हैं कि हम करेंगे, तो हम कोई एक्शन लेकर आए. So I thought it was good of Mitzi Hunter to do that, take the lead on it, but unfortunately उन्होंने कहा कि प्रॉपर नोटिस नहीं दिया गया. हंसने की बात ये है कि ये बात वो गवर्नमेंट कह रही है जिसने विद इन 24 आवर्स डिसाइड किया कि नहीं हम लेजिस्लेचर को वापस बुला रहे हैं
ताकि हम notwithstanding clause को सकें। उसमें तो इनको less than 24 hours लगे, ठीक है, इन्होंने तो किसी को नोटिस नहीं दिया, लेकिन जब इस्लामोफोबिया का मोशन इनके सामने आता है, मैं भी काउंसलर हूँ, I know how notice of motions go. Correct. I know how there are some clauses you can use. Stay with me. I have a call. 1 second. Hold on. Hello. Hi there. This is Sarah Singh calling in for the interview today. Yeah. Could you just stay on the line with me? I have a liberal candidate with me right now. We're just finishing up. Just stay with me for 1 second, please. Okay, not a problem. Okay. So Samira, we're gonna wrap up. Thank you so much for your time. And I wish you all the best and good luck for next year, inshallah. I'll get back again with more detail. I would say an interview with you in regards to your writing and what are your plans for your writing and all that stuff. Thank you so much and joining us tonight. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you for having me. I enjoyed my chat with you. Thank you very much. It was likewise. Thank you very much. Bye bye. Viewers, ये थी हमारे साथ Samira Ali is a liberal candidate from Milton, and we were just discussing in general her writing issues and Islamophobia as well. And we have with us tonight a dear friend who has been on my shows in the past. But now I think she came pretty late, so today she's with us. She missed her last slot with us. She is the Deputy Opposition Leader for NDP in Ontario, Sarah Singh, with us tonight. Good evening to you. How are you, Sarah? I'm doing so well. Thanks so much for having me on tonight. It's a pleasure always to have you on the program, Sarah. I'm gonna go straight up to you. We are shocked today to hear that the motion that with the Ford government thought that they're going to bring it up and regarding Islamophobia, the hate crime, has been put on a side for now. What do you know about that, Sarah? Yes, I think it's really unfortunate. There's an opportunity here. There's been so much trauma for the community, the Muslim community. This was really an opportunity for the government to help us move forward in healing, help us create a space for dialogue around the work that needs to be done to fight Islamophobia and anti-Muslim hate in our communities. The motion was presented in the legislature as we're in an emergency session right now, and we should be working on the priorities of Ontarians. Unfortunately, the government did not support the motion, and that's really heartbreaking. I think the unfortunate and tragic events that happened in London, Ontario, and I know everyone has the Afzal family in our thoughts and prayers. We as legislators, I think, have a very important responsibility, not only to fight Islamophobia and anti-Muslim hate, but ensure that the work that we're doing in our legislature is making sure that all communities are protected from hate and discrimination, and that we create laws and policies to do that work. And some of that work happens as well through the Anti-Racism Directorate, for example. And we know that unfortunately this Conservative government cut much of the funding to the Anti-Racism Directorate. So not only does that limit some of the work around anti-Muslim hate, but also anti-Black racism, anti-Indigenous sentiments, and so many other groups that have been impacted by this very dark behavior in our communities. We have to do the work. It's not enough to just say we're going to fight this. We have to do the work to actually take action. Yeah, no, absolutely, you're right about that. Do you know that why the motion have been put on a side, where the Premier had went down there, stood on the podium, deemed that the act as a terrorist act and everything, and then why this motion have been not passed or been put on a side? I can't speak to what the government's intent is, but I think that it's important that in principle we support that motion. It was brought forward by a member in the legislature, and I think
in principle, we should support that. I mean, obviously, as NDP members, we do. This is why we have, our colleague Rima Burns-McGowan has been a champion on this bill to have a day to remember, and tackle Islamophobia, even prior to this horrible attack in London. And that work is supposed to be happening on a regular basis. And it doesn't appear there's a real commitment, to be honest, by the government to tackle, again, any form of oppression that's taking place in our communities. This was a premier and government that didn't even believe that systemic racism was a real thing in the province of Ontario. And so, we have to acknowledge and accept the truth and reality of what's happening in our communities to meaningfully work on those issues. And so, I urge the government to invest in the Anti-Racism Directorate, invest in the community organizations that need to carry out this work, but we have to have dialogue in order to do this work meaningfully and consult with the communities that have been impacted. That's also something that this government does not do effectively, is consult with groups, work with them to actually move forward on the policies that we need to in the province of Ontario. Well, I mean, honestly, I'm speechless tonight after, witnessing this, that this should have been, one of those things that should have been passed. So, and a clear message should have gone to Canadians across coast to coast that these hate crimes, these systemic racism, this Islamophobia, all these things, this is criminal, and this needs to stop. So I'm hopeful that the federal government could go ahead and pass the motion. I hope Prime Minister Justin Trudeau, he was there in the podium as well in London, Ontario, and I hope that they come out with some sort of a resolution to this. My other question to you is, I have a few of them, so I'm gonna change the subject a little bit right now. I'm gonna go into, NDP have this agenda, and I had the opportunity to talk to Randa Horvath last year, where she mentioned in regards to the agenda what NDP had regarding the housing sector problem that we have in this province, where people could not afford the housing. Could you just kind of reiterate what that agenda is? And now even the laws have been the mortgage laws have been kind of changed a bit in June. So let's refresh our viewers who are watching it tonight. What are those? Yeah, absolutely. So we have our housing platform, which is Homes in Ontario, to help ensure that everyone in Ontario has a place to call home. As we all know, housing and housing affordability has become a major crisis in our communities, whether that's for a first-time home buyer or somebody who's renting. It's becoming harder and harder to enter the market and stay in the market. And so our plan focuses on addressing some of the underlying issues and increasing affordability. And so we know, for example, that for first-time home buyers, it's very difficult to come up with the equity for a down payment. And so we have our Homes in Ontario plan that helps to provide a support grant for that down payment and help a first-time home buyer get access to the market. But it also helps to seek those that are renting to ensure that there aren't, arbitrary increases to rents, as we know that's been happening in our communities, but also help those that need access to subsidized housing to actually acquire that. In the province of Ontario, both Liberals and Conservative governments did not invest in housing, and that has meant that there was a lack of stock of affordable housing for individuals as well. So we need to invest in housing in order to not only
ensure that people have a safe place, but it also creates good paying jobs. And so the plan is, and I encourage listeners to and viewers to, go to our website to learn more. But it's a comprehensive plan that really seeks to address some of the affordability issues, but helps make it more accessible for people to enter the housing market. So that subsidized housing and the NDP plan of having that down payment arranged for the first-time home buyers or for the buyers who are in the market for the first time, how do people? Now, this is something when you guys are planning to come in the government at that time, it will be enforced. So this is something already in the pipeline where you are working with the current government and it will be available. So these are some of the policies we're proposing for when we form government, but we're open to working with the government currently to help make some of these ideas a reality for everyday Ontarians. We have introduced motions and bills in the House as well. Many of my colleagues have to address some of these issues. For example, Jessica Bell, she has introduced a bill to ensure that there aren't increases above the guidelines to people's rent. Right. Also to create a speculation tax, as we know that many of the foreign buyers are also contributing to the rising house prices. So there are several mechanisms that New Democrats are trying to use in order to help people access the market, but address some of the issues that are causing us to be in a crisis mode here. Okay. One of the other questions that I have for you in regards to what are the current laws in place in Ontario that people need to know on hate crime? What kind of sentences are there, and what do people need to do? God forbid if somebody is a victim of a hate crime, what do they need to do? How to go about that? Well, I would definitely encourage anyone that's experienced, and believe they've experienced a hate crime, to contact their local police department to report the crime. Hate crimes can occur in a variety of different ways, and people can experience them differently. So it is important that if you believe you've been the victim of a hate crime, that you reach out to your local law enforcement so they can investigate and hold those perpetrators to account. But sometimes these crimes happen, and it is difficult to catch the perpetrator. And so it's important that we are working together to strengthen those laws. And elements like our anti-racism directorate also help us address these through systemic issues as well, because sometimes people don't feel comfortable even going to the police, for example, to report the crime. So we need to work with communities to build trust in order to have for them to have the confidence to report these crimes as well. And that's why the work of the Anti-Racism Directorate is so important in addressing this hate that happens in our communities, because hate crimes can be against someone because of their religion, for their sexual orientation, for example, because of their ethnicity or race as well. So, it's important that we are addressing this and strengthening the system for people to feel safe in their communities. Okay. One more question before I let you go for tonight, and we'll talk to you on another occasion. That is, as you know, today was the first reopening, the first step towards reopening in Ontario today. What do you want to say about that? Do you think that this three-tier system is going to work, or do you guys have reservations as an opposition party in the House? Well, I think, what everyone in Ontario wants to have is the confidence in the plan that we're going to stay open. Finally, I know that Ontarians have been doing their part to, get vaccinated, to follow the rules, and, it's been a very difficult year for many. So I think for a lot of folks, there's a lot of excitement about reopening, and I hope that we will
will stay open. But an important part of that strategy is really making sure that people are getting vaccinated. And that's where there's a little bit of concern for a lot of us, is that we're not sure if there's a real strategy here from the province to ensure that everyone's going to get their second dose. I'm relieved that this week we did hear that the health minister has said that hotspot communities will receive a greater allocation of the vaccine. We know that's critical in making sure that communities like Peel and in Brampton, that we avoid a fourth wave, and especially with the Delta variant. But we need to keep that pressure up and ensure that supply continues to come to those hotspot communities. I think for a lot of small businesses that are reopening, they're relieved to be reopening, but many of them have suffered for the last year, losing tremendous amounts of revenue, and it has been extremely difficult. Even independent producers of ethnic media, for example, that I've connected with, have shared how difficult it is and has been for them. So I think what we would also like to see from the government is a clear path to economic recovery for our province here. And so there's a lot of concerns because, small businesses were not effectively supported throughout the pandemic. And these are folks like our, neighbors that are, operating a small business in our communities. That are really struggling at this point in time, and the government needs to help step up to the plate and make sure that they're going to recover some of those revenue losses, because it's not just their small business that's suffering, it's their livelihood, the ability to pay the mortgage, the ability to pay all of their household expenses in addition to the business expenses as well. I come from a small business family, so I understand that pressure. So I think with the reopening, we're hopeful that this will be the last one, but it's going to take serious investments to make sure that people are getting the support they need. And just to wrap that up, Anjum, I think it's also important to acknowledge that we need to have a plan here for how the schools are going to be reopened in September. A lot of concerns around that. Our schools have been closed for the longest in North America, and that's unfortunate, and that's because the government failed to invest in our schools, make sure that our classrooms were going to be safe, and yet we don't see a plan for September. So, I'm hopeful that we're going to get folks vaccinated over the summer, but I also want to see a clear plan from the government on what we're going to do to help our communities and also make sure that our schools are safe. Well, I mean, you guys are the opposition, party in the House, so I mean, you need to keep them accountable at all time. Thank you very much for your time, Sarah. I really appreciate that. We need to go to that visual that's happening in Scarborough right now live, and we're gonna get you back on another occasion. We'll talk to you again. Thank you so much, Sarah. Thank you. Thank you so much. It was a pleasure to be on. Everyone have a great night. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. नाज़रीन, ये थी हमारे साथ सारा सिंह जो कि है एनडीपी की डिप्टी अपोजिशन लीडर हाउस के अंदर, एंड वी थॉट वी शुड गेट लिटिल बिट ऑफ इनसाइट फ्रॉम हर इन रिगार्ड्स टू व्हाट्स गोइंग ऑन इन द हाउस regarding that, especially the motion, and you just heard what she said. So we're going to go on a very short break, and I'll come back to you right after those messages. That's important as well. You are watching Prime Time with me, Anjum Malik, on Voice of Toronto Television. Our studio lines are 905-670-4114. Please stay with us, and I'll come back to you right after this 2 minutes break. Thank you very much. Why is on the phone? We need to. उसको बोलो कि we need to get the shot from the back. Oh yeah, okay. अच्छा नहीं मुझे चीज़ें डिस्कस करनी है, दो चीज़ें। एक तो ये प्लान दोनों का नाम मैंने दिया है। Is it looks good or bad? Looks good. For? When you're on the screen, दोनों का नाम है। दोनों का नाम मैंने दिया है। वो भी आ जाएगी ना उसके अंदर। अरे नहीं यार, नहीं समझे Okay. इस वक्त मदर शफीक जो है ना, फ़लस्तीन का जो कॉज है, काफ़ी लोग वहाँ शहीद हो चुके हैं, डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है पूरी दुनिया के मुंह पर, ह्यूमन राइट्स वालों के मुंह पर,
इंसानी जान की कीमत हर जगह पे सेम है। खुदा के लिए इंसान को इंसान समझे, बाकी मजहब तो आपका सारा कुछ अपनी जगह पे। It's always a very emotional. हम भी पैसे जमा कर रहे हैं फलस्तीन भाइयों के लिए। I think the long weekend will definitely still be in lockdown. हमारा जो बजट है वो पास हो गया है। क्या खास ऐसी प्रमोशन आप दे के जा रहे हैं? फर्स्ट 10 कस्टमर हमारे पास आएंगे। फर्स्ट 10 कस्टमर गोल्ड की जो नोट पिन है बिल्कुल फ्री देंगे। Please stay with us and you are watching Prime Time with Anjum Malik on Friday. रियल एस्टेट जरूरत भी, इन्वेस्टमेंट भी। रियल एस्टेट खरीदते और बेचते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है? इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द सेलर्स एंड बायर्स। मैं असफर ताहिर आपके लिए ला रहा हूँ रियल्टर्स कैफे, जहाँ पर प्रोफेशनल रियल्टर्स एंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट्स आपके उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आप जानना चाहते हैं। रियल्टर्स कैफे ओनली ऑन वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। रियल एस्टेट जरूरत भी, इन्वेस्टमेंट भी। रियल एस्टेट खरीदते और बेचते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है? इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द सेलर्स एंड बायर्स। मैं असफर ताहिर आपके लिए ला रहा हूँ रियल्टर्स कैफे, जहाँ पर प्रोफेशनल रियल्टर्स एंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट्स आपके उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आप जानना चाहते हैं। रियल्टर्स कैफे ओनली ऑन वॉइस ऑफ टोरंटो टीवी। A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well or a hand pump, call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ज़कात, सदक़ात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फ़ोन करें 1-866-754-3111। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न के ऊपर, और हमारे स्टूडियोज़ की लाइन है 9056704114। आप हमें लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे और सारे IP बॉक्सेस के ऊपर। मेरा और आपका साथ रहता है एवरी फ्राइडे को रात 8 बजे। और आज ख़ास तौर पे हम एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं जो विजिल हो रहा है, जो लंदन के विक्टिम्स थे जिनकी शहादत हुई है, जो अफजाल फैमिली है और उनके जो बच्चे थे, उनका एक बेटा जो है अभी हॉस्पिटलाइज्ड है। तो लंदन ऑन्टेरियो में भी इसका विजिल हुआ था और आज स्कारबोरो में लिबरल पार्टी जो है वो इसका विजिल कर रही है। तो हमारे साथ इस वक्त मज़र शफीक साहब वहाँ से लाइव हैं हमारे साथ, तो हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? जी मज़र साहब, आपका टाइम का बहुत शुक्रिया और हमारे साथ कनेक्ट होने का इस प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया।
सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि हमारे साथ मज़र शफीक साहब हैं जो कि कैंडिडेट हैं स्कारबोरो से लिबरल पार्टी के नेक्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस के लिए, और इनके साथ मनाइल भी हैं जो कि स्कारबोरो गिल्डवुड से वहाँ पर लिबरल पार्टी की नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं एज़ वेल। ख़ास तौर पे आज वो हमारे साथ हैं स्कारबोरो से विजिल जो हो रहा है, तो हम उनसे ज़रा डायरेक्ट बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम अंजुम भाई, बहुत पहले तो बहुत शुक्रिया आपका सर। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी पिक्चर थोड़ी स्टिल हो रही है मेरे ख्याल में, तो आप उसको ज़रा ठीक कर लीजिए मेरे ख्याल में। आपको आवाज़ आ रही है हमारी? आई थिंक नाजरीन हमारी उनके साथ उनका कुछ ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम है जो जहाँ से वो बात कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं उनसे दोबारा कनेक्ट होने की। जब तक हम मैं आपसे ज़रा थोड़ा सा, जब तक मैं चाह रहा था कि आज थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरले प्रोग्राम के हवाले से बता दूं कि आज हमने प्रोग्राम के दौरान बात की है, हमारे साथ समीरा अली थी जो कि मिल्टन से नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं लिबरल पार्टी की नेक्स्ट इलेक्शन में, और उसके बाद हमारे साथ थी सैरा सिंह जो कि डिप्टी अपोजिशन लीडर है एनडीपी की, उनसे भी हमने बात की, और हमारे साथ अब कनेक्ट हो गए हैं मज़र भाई, तो हम उनके पास चलते हैं लाइव जहां से इस वक्त उनसे बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम अंजुम भाई, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मज़र साहब, थोड़ा सा तो पहले ये बता दीजिए अपने बारे में, आप जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं अगले साल इंशाल्लाह, प्रोविंशियल इलेक्शन जो हैं उसके हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए, और फिर मैं आगे चल के थोड़ा सा आपसे पूछूंगा जो आज जो विजन हो रहा है ये अफजाल फैमिली के लिए, उसके बारे में थोड़े से डिटेल बताइए हमारे नाजरीन को। जी बहुत शुक्रिया अंजुम भाई। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि मैं जो है स्कारबोरो सेंटर से ओंटारियो लिबरल पार्टी का कैंडिडेट हूँ। मेरी नॉमिनेशन जो है वो अक्टूबर में हुई थी, एंड आई एम नाउ द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ ओंटारियो लिबरल पार्टी इन स्कारबोरो सेंटर। और जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन जो है वो अगले साल जून में स्केड्यूल्ड है, और उसके लिए ये है कि हम लोग अपनी पूरी कैंपेन और जो है वो जारी रखे हुए हैं। अगरचे कोविड की सिचुएशन है, इसमें बड़ी लिमिटेड किस्म की हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है लोगों के पास जाने की, लेकिन हम मेक श्योर ये कर रहे हैं कि घरों से फ़ोन कैनवस के ज़रिए से और जूम मीटिंग्स के ज़रिए से और जो कम्युनिटी लीडर्स हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के, उनके साथ जो है बातचीत करके और मेक श्योर करें कि अपना पैगाम जो है, अपना मैसेज जो है वो उन तक पहुंचाएं। तो इंशाल्लाह ताला जी वी आर वेरी मच होपफुल कि इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसमें ओंटारियो लिबरल पार्टी बहुत अच्छी सीटों के साथ जो है कामयाबी हासिल करेगी इंशाल्लाह। चले जी, गुड लक टू यू फॉर दैट। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज आपकी यहाँ जो विजिल जो हो रही है स्कारबोरो में, यहाँ पर की नोट स्पीकर कौन कौन यहाँ पर आया हुआ है? जी सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो ऑर्गेनाइज की गई है विजिल, ये कैनेडियन पाकिस्तानी एसोसिएशन ऑफ स्कारबोरो ने ऑर्गेनाइज की है यहाँ पे स्कारबोरो के अंदर। अच्छा। और ये एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, कैनेडियन पाकिस्तानियों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और जो हर ऐसे मौके के ऊपर जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो वो बड़े वोकल हैं, और वो इश्यूज़ को जो है मेक श्योर करते हैं कि पॉलिटिशियंस को और यहाँ के जो साहब इक़्तिदार लोग हैं वहाँ उन तक अपना ये इश्यूज़ पहुँचाएँ। तो आज यहाँ पे जो विजिल हुई उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जो पॉलिटिशियंस ने शिरकत की उसमें कॉन्सलेट से जो है कौंसल हैं, उसके अलावा जो है एमपीज़ में सलमा जाहिद हैं, एमपी जॉन मके हैं, एमपीपी माइकल कोटो हैं, एमपीपी मिट्जी हंटर हैं, और जो डिप्टी मेयर हैं माइकल थॉमसन वो मौजूद हैं, और उसके अलावा कम्युनिटी के बहुत सारे लीडर्स लोकल जो हैं वो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं यहाँ पे। और सबका जो है एक ही कंसर्न है आज कि ये जो इस्लामोफोबिया है ये एक रियल इशू बनता जा रहा है कनाडा के अंदर, और ये एक बड़ी ख़तरनाक जो है वो किस्म की जो है वो एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि जो टाइम के साथ बजाय ये कि उसमें कमी आने के स्टैटिस्टिक्सली ये हेट क्राइम जो है बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है बड़ा मैं समझता हूँ ये एक वेकिंग कॉल है ओवरऑल हम सब के लिए, और उस पर अब यही कन्वर्सेशन जो है वो शुरू हुई है कि जी इसके लिए हमें क्या करना है, और उसमें यही है कि तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, बल्कि मैं कहूँगा कि चारों लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, जिसमें आपका स्कूल बोर्ड भी है,
हमें उससे स्टार्ट करना पड़ेगा कि क्या हमें स्कूल के करिकुलम में कुछ चीज़ें ऐड करनी है, क्या हमें फेडरल लेवल पे कोई लेजिस्लेशन करनी है, प्रोविंशियल लेवल पे कोई तो ये बहुत सारा काम है जिस पे लोग जो हैं अब सोचना शुरू हुए हैं और बातचीत करना शुरू हुए हैं कि जी हम, और ये अपने पॉलिटिशियंस तक बहुत सारी ईमेलें, फ़ोन कॉलें और ये कंसर्न और ये जो रैलीज वगैरह ये मुनक्कद की जा रही हैं, इन सब में ये इशू को हाईलाइट किया जा रहा है। अच्छा मज़हर साहब, ये बताइएगा कि स्टीवन डेल डूका जो आपके लीडर हैं काफ़ी वोकल रहते हैं, मैं उनको सुनता रहता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ आज ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आपका लाया अमल क्या है नेक्स्ट इलेक्शन का, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि ये जो सिस्टेमिक रेसिज्म है, जैसे आपने भी कहा, स्कूल लेवल पे, सिटी लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे, फेडरल लेवल पे, आपका इसमें क्या विजन क्या है कि किस तरह आप इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो एंड पीपल शुड नॉट बी लूजिंग देयर लाइव्स इन दिस कंट्री। जी अंजय भाई, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे लीडर हैं स्टीवन डेल डूका, उनका यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मैसेज है वो आम ग्रास रूट लेवल तक जाए, हमारा जो पैगाम है लोगों तक पहुँचे, उनके जो इश्यूज हैं वो कन्वे करें। जैसे अब अभी हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च हो रहा है अगले इलेक्शन के लिए, तो उसमें यह है कि हमने टाउन हॉल्स जो है जूम के ज़रिए से, वेबिनार के ज़रिए से टाउन हॉल्स की लोगों से फीडबैक मांगा है। 50,000 से ज़्यादा लोगों ने अपना फीडबैक दिया है और ये जो फीडबैक है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम अपना जो लॉन्च कर रहे हैं प्लेटफॉर्म अगले इलेक्शन का, उसमें ये फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसमें ये सारे इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। जहाँ तक आप सिस्टेमिक रेसिज्म की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि जब लिबरल गवर्नमेंट थी अंटारियो के अंदर, तो मुझे याद है कि हमने पहली दफ़ा डायरेक्टरेट ऑफ एंटी रेसिज्म बनाया था, जिसके माइकल कोटो जो थे वो हेड थे उस वक्त। तो वो उसका मकसद ही ये था कि कोई भी ऐसा हेट क्राइम हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे पता चले कि यहाँ पे कोई जो है हेट क्राइम हो रहे हैं, तो उसका जो है वो हमें पता चले, उसको हम एनालाइज करें और मेक श्योर करें कि उसको किस तरीके से हम जो है उसकी रूट काज को जानकर उसको ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जब ये डग फोर्ड साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने वो डायरेक्टरेट ही ख़त्म कर दिया और मैं समझता हूँ कि उससे बहुत नुकसान हुआ है। तो लेजिस्लेशन में बहुत सारी चीज़ें करने की हैं सर, उस पर बहुत सारी जो है, जैसे अभी फेडरल ने आज अनाउंस किया कि वो एक जो है समिट करेंगे इस्लामोफोबिया के ऊपर, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा एक इक़दाम है। इसमें यह है कि हमें मुख्तलिफ लोगों को सामने बैठाना पड़ेगा, उनकी राय लेनी पड़ेगी, उनके आइडियाज़ को हमें लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम कोई ऐसे लाज या ऐसी चीज़ बना सकते हैं कि फ्यूचर में इस तरह के हादसा जो हैं वो ना होना। अच्छा मज़हर साहब, आप ऑटवा में फेडरल गवर्नमेंट आपकी है इस वक्त, जस्टिन ट्रूडो साहब जो थे वो लंदन ओंटारियो में विजिल पे आए भी थे और उन्होंने हाउस में भी इसको कंडेम किया। आपके जो लीडर हैं, प्रोविंशियल लीडर हैं, उन्होंने बात की है जस्टिन ट्रूडो साहब के साथ कि इसके ऊपर जो है हाउस ऑटवा के अंदर फेडरल लेवल के ऊपर इसके ऊपर एक मोशन लेके लाया जाए और एक जुडिशरी में रिफॉर्म ला के कोई ऐसा एक लॉ बनाया जाए कि ये ऑनलाइन हेट क्राइम जो हो रहा है और ये जो रेसिज्म है, जो सिस्टेमिक रेसिज्म है और ये जो इस्लामोफोबिया है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या ऐसे अवामिल गवर्नमेंट करने जा रही है जिसका आपको इल्म है, जो कि हमारे नाजरीन आपको सुनना चाहते हैं आज? सर बिल्कुल ऐसी चीज़ें होने की ज़रूरत है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया कि वो एक नेशनल समिट करेंगे, इसी तरह प्रोविंशियली मैं ये बता सकता हूँ कि आज हमारे जो लीडर स्टीवन डेल डूका है और हमारी जो MPP है मिट्सी हंटर, वो कल एक मोशन लेके आई हैं लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, कि इस्लामोफोबिया के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कंजर्वेटिव पार्टी है उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। अब आज जो है वो दोबारा कोशिश करेंगी कि वो मोशन दोबारा आज रात को जब इजलास होगा तो उसमें वो इस मोशन को दोबारा लेके आएंगी इंशाल्लाह ताला, और कोशिश ये होगी कि कंसेंसस के साथ ये जो मोशन है ये वहाँ से मंजूर हो, ताकि इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने में आसानी हो सके। अच्छा, आपकी जो दूसरी कैंडिडेट हैं मनायल, वो आपके साथ हैं, उनसे बात हो सकती है इस वक्त?
इज शी देयर? जी वो मेरे साथ है, यही विजल में है। मैं उनको जो है वो कहता हूँ कि वो आपको ज्वाइन कर लें। और अच्छा ठीक है, अगर ठीक है, नहीं हम उनको देख सकते हैं, वो हमारे साथ हैं। आपका आज ख़ास तौर, अच्छा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप ज़रा ये अपने कैमरे को थोड़ा सा दिखाएं कि हमारे जो नाजरीन आपको देख रहे हैं कि वहाँ पर कितनी बड़ी कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी हुई हुई है। और हम ये भी चाहेंगे कि थोड़ा सा अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप हमारे एक रिपोर्टर बन जाएं और जाके ज़रा एक दो लोगों से ज़रा बात करें कि उनके सेंटीमेंट्स क्या हैं। उनको बोलें कि जी अब वो लाइव वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविज़न पे आपसे बात कर रहे हैं, तो लोगों के ज़रा सेंटीमेंट्स मैं ज़रा सुनना चाहता हूँ कि क्या हैं। जी जी, ज़रा कैमरा अपना ऊपर कर देना आप, तो इनको भाई के इनके जो सेंटिमेंट्स है वो हम सुन लें ज़रा। थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर दीजिए प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, ये ज़रा एक टीवी चैनल है, अंजुम भाई है, ज़रा बताइए आज के क्या तासरात हैं आपके? हाँ थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। दिल में बड़ी कमी है, बस अल्फाज नहीं है जो कि मैं बयान करूँ। तो ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कनाडा में रहते हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और ये जो इस्लाम फोबिया है इसको डिस्करेज करें और गवर्नमेंट से भी कहें कि वो हमारे लोगों की मदद करें। थैंक यू सर, थैंक यू। अंजू भाई मैं एक और जी जी, आप थोड़ा सा अपना कैमरा ऊपर कर दिया करें जब आपकी बात हो रही हो। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? तबीयत ठीक है? ये ज़रा अंजुम भाई हैं टीवी के ऊपर, ज़रा बताइए आज अपने तासरात दें। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये डॉक्टर साहब हैं हमारे। जी अस्सलाम वालेकुम। I'm Dr. Rana, I'm the leader of the Centrist Party of Canada. जी तो हमें बहुत अफसोस हुआ, हम ये अर्ज कर रहे हैं कि ये जो लंदन अटैक था ये एक मुस्लिम फैमिली पर नहीं था, ना सिर्फ सारी जो है माइनॉरिटीज़ पर, बल्कि ये सारे कैनेडियंस के ऊपर था। वेरी ट्रू, और इसको वेरी हम ट्रू। सबको मिलकर कॉन्डेम करना चाहिए। बिल्कुल, हम कोई एक कम्युनिटी नहीं है यहाँ, कोई मुस्लिम, जू, हिंदू, क्रिश्चियन नहीं, बल्कि हम एक स्ट्रॉन्ग कैनेडियन नेशन है और हम हर किस्म के हेट, इस्लामोफोबिया, एंटीसेमिटिज्म के खिलाफ इकट्ठे होकर हम जो है लड़ेंगे। और हम चाहते हैं गवर्नमेंट इफेक्टिव लेजिस्लेशन करे हेट क्राइम्स के अगेंस्ट। बिल्कुल ठीक। क्यूबेक के अंदर जो बिल 21 है उसकी लेजिस्लेशन में विमेन को स्पेशली एक्सपोज किया, मिनॉरिटी विमेन को टुवर्ड्स हेट क्राइम्स, एंड दैट शुड बी रिमूव्ड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मजहर साहब हमारे साथ, जी जी गो अहेड। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जो दूसरी कैंडिडेट है जी जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन ये थे हमारे साथ मजहर साहब, और अब हम चलेंगे हमारी दूसरी जो कैंडिडेट हैं मनाइल के साथ, उनसे हम बात करते हैं। वो भी विजुअल में हैं हमारे साथ। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। हम एक जब तक उनको कनेक्ट करते हैं एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं, उसके बाद हम फिर वापस आते हैं। प्लीज़ डू नॉट चेंज द चैनल। यू आर वाचिंग प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक ऑन वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन। थैंक यू। रियल एस्टेट ज़रूरत भी, इन्वेस्टमेंट भी। रियल एस्टेट खरीदते और बेचते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है? इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द सेलर्स एंड बायर्स। मैं असफर ताहिर आपके लिए ला रहा हूँ रियल्टर्स कैफ़े, जहाँ पर प्रोफेशनल रियल्टर्स एंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट्स आपके उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो आप जानना चाहते हैं। रियल्टर्स कैफ़े ओनली ऑन वॉइस ऑफ अंजुम मलिक। और आज हमारी कोशिश ये है कि हम स्कारबोरो में जो विजिल हो रहा है अफजाल फैमिली के लिए, हम उनसे बात कर रहे हैं। हमारे जो वहाँ पर कैंडिडेट हैं लिबरल पार्टी के, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अरेंज किया है, तो हमारे साथ अनदर कैंडिडेट है मनाइल। वी विल टॉक टू हर।
Hello. Hello, assalamu alaikum. Walaikum salam. Manal, how are you tonight? Thank you very much for joining us from Ground Zero. Thank you. Yes, no problem. No. Could you kind of tell me a little bit about what is the mood over there and what are the sentiments of the people who you are talking to today? It feels somber. I think there's heartache, but at the same time, there's a sense of purpose that we need to push for better, inshallah. So Inshallah. It's a combination of the two. Absolutely. So let's talk a little bit about yourself to our viewers tonight who are watching you. You are a candidate from the Liberal Party for the next provincial election. Let's talk about your riding, a little bit about yourself, so people could understand, when they go out and vote for you next year, what do they need to know? They need to know so I'm the MPP candidate for Scarborough Rouge Park. Okay. I think right now we're getting a sense of irritation with the present situation and a need for action. So when it is time to vote, do your best to do your due diligence to vote for a government that will prioritize our needs as a community and recognize the necessity for actual actions and not just rhetoric. Correct. So what is the agenda that you are bringing it forward in the next election as compared to your other opponents for the same role? Well, right now there's a real prioritization to listening and taking the time to do the proper research when it comes to anything, right? So right now we're getting a sense that there's not due diligence when it comes to certain steps. And so we're in the process of listening to the people, doing take the mic sessions so that we're listening to what sentiments of the citizens are and what we need to do in terms of pushing platforms that fit an inclusive Ontario. Right. What do you think, what are the core strengths of Stephen Del Duca and your party right now as compared with your opponents? Right now, my sense is he has a compassionate position. He takes the time to really listen to the experts. Okay. When it comes to any of the issues, he takes the time to listen. He leads with research as opposed to plain sentiments. So as opposed to his own sentiments coming into form of leadership, he takes the time to really get a sense of what is best and isn't afraid to stand for that. Okay. Now, let me ask you this question. I mean, you guys are number 3 party right now in the province. And, still there's more time to go till next year election. People would like to know exactly how you're going to be different than the party that are governing our province right now. Well, right now, there's a real impact and necessity to focus on solutions. Our province and our country has gone through a lot with the pandemic. I feel there's a sense of irritation from parents, from the education system, from how the approach towards the healthcare, and even just towards what happened in London. And we really need to take the time to take action and to actually come up with solutions that are practical and can be put into fruition quickly and in a timely manner. Okay. What are the core strengths of yourself that you possess over the other opponent from the same region who are going to be fighting against you? Even if the going gets tough, one of those things is that I will show up. Okay. There are times where it's really important to listen to constituents and to sincerely care about the concerns of the community. I've lived in the riding. Okay. I
So I do have a grassroots understanding of the issues and a sincere care for the community. Okay, okay. What is that one profound message that you have for our viewers tonight who are watching you? When it comes to voting, it's a real message to government about what your priorities are, what you care about, what issues you want the government seriously. And so when you do vote, really take into account what you feel and how you feel the present government is, if their steps and their actual solutions are practical, or is it rhetoric? Is it followed through with solutions, or is it simply pandering? And when you do vote with what you feel the future of Ontario should look like for us, for our children. Well, I wish you all of you the best of luck. Keep on working hard and stay connected with the community. That's what I would say. People want to see some results, especially the problem we have in this province regarding the housing, the jobs, especially with this pandemic, the way things have happened. I think we need to get on a roadmap where people can plan for a future. So thank you so much for joining us. Thank you. Thank you for having me, Anjum. Thank you. Have a wonderful evening. Bye-bye. 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 नाज़रीन, ये थी हमारे साथ मनायल और जो कि स्कार्बरो से एक कैंडिडेट हैं लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा की नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। हमने आज अपने इस प्रोग्राम के तवज्जो से थोड़ी सी कोशिश की कि जो हमारे कोर इश्यूज़ हैं उस पर हम थोड़ी सी हम बात करें, और ख़ास तौर पे मेरी ये एक बड़ी गुजारिश रहती है हमारे ईमानों के साथ, जो लोग हमें देखते हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के लोग हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग हैं, कि ये जो सिस्टमिक रेसिज्म है, जो हेट क्राइम है, जो इस्लामोफोबिया है इस मुल्क में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इसकी जड़ें नहीं हैं, और ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं अगर इसका एक रिफॉर्म हो, प्रॉपर जुडिशरी सिस्टम इन प्लेस हो, और रेजोल्यूशंस आर ऑलवेज देयर। हमारे कुछ साथियों ने कहा कि स्कूल लेवल से, काउंसलर लेवल से, प्रोविंशियल लेवल से, फेडरल लेवल से, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ठीक होने वाली हैं। आई होप कि आइंदा कोई और अफजाल फैमिली की तरह दोबारा सफ़र ना करे इस मुल्क के अंदर, और ये मेरी दुआ है अल्लाह ताला उनकी ये जो सब हमारी काविशें अब हम कर रहे हैं अपनी तरफ से, जो जाने वाले थे वो चले गए हमें छोड़ के, उनका एक 9 साल का बेटा है पीछे रह गया है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे और उसको ज़िंदगी दे, और जो डिपार्टेड सोल्स हैं उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाएँ। दिस इज़ माई one of my, I would say, my dua to all of them और उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए। और हमें आप प्रोग्राम के बाद आपका फ़ीडबैक जो है बहुत ज़रूरी रहता है, इसीलिए हम इसी तरह हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमें आप IPTVs पे देखते हैं, voiceoftoronto@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है, आप हमें उस पर ईमेल भी लिख सकते हैं, और प्रोग्राम के बाद आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रोग्राम हम चाहते हैं कि जब हम प्रोग्राम कर रहे हो तो आपकी कॉल्स भी आएँ और आपकी कॉल्स हम लें भी, और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा जो प्रोग्राम्स हम करें उसके लिए हम कोई एक 10 मिनट का वक्फ़ा रखेंगे बीच में, जो कि हम लाइव कॉल्स के लिए रखें। हमारे स्टूडियोज़ का नंबर है 9056704114। मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा आई विल कम बैक टू यू, और नेक्स्ट वीक हमारे साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैं लेके आ रहा हूँ। कैनेडियन मेंटल हेल्थ एसोसिएशन के जो CEO हमारे साथ होंगे, बॉनी कराम भी हमारे साथ होंगी नेक्स्ट वीक एज वेल, और 2-4 हमारे साथ गेस्ट होंगे। प्लीज़ कीप ऑन वाचिंग प्राइम टाइम विद अंजुम मलिक ऑन वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन। हम बहुत सारे अपने नए शोज़ जो हैं वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं इंशाल्लाह आपकी तफरीह के लिए, और यू विल बी सीइंग लॉट ऑफ न्यू शोज़ कमिंग टू यू। हमारी जो आवाज़ है वो आपकी आवाज़ है, योर सिटी योर वॉइस, वॉइस ऑफ टोरंटो आपकी आवाज़ है, और अपना ख्याल रखें, आपके इर्द गिर्द को ख्याल रखें, और आई कम बैक टू यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्राइम टाइम विद मी ऑन वॉइस ऑफ टोरंटो television. Thank you very much, and very good evening, and have a great night, and stay blessed and stay safe, and keep on sending your showers to the departed souls that have left this world, और दुआ में उनके लिए ज़रूर दुआ करें। अल्लाह हाफिज़, a very good evening, bye bye.
.com नाम है अपना, बख्शिश है उसकी पर मिलाना काम है अपना। अल्लाह का करम, फरिश्तों की दुआएं, हम ऐसी जोड़ियां बनाए। रिश्ताडीपू.com, जहां प्रोफेशनल मैच मेकर्स बिना कोई वक्त जाया किए मिलाए खूबसूरत जोड़ियां। रजिस्टर नाउ 9053700065। जद कर तू आना है मैनू रोब विखाना है, तेरे पिछे रेंदी मैं तू हथ छड़ाना है। जद कर तू आना है मैनू रोब विखाना है, तेरे पिछे रेंदी मैं तू हथ छड़ाना है। मैनू रोज रवाने दी तेरी आदत बन गई आ, सीने नहीं लांदा तू हुन प्यार न करदा है। ओ गल्लां ना रहियां गल गल ते लड़